everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Meenakshi. I hope you all are doing great. First of all, I really want to apologize because in my last video I promised that now I'll be regular with my YouTube videos, I'll be regular with my Instagram, but I'm so sorry that I couldn't keep my promise, and there is a reason behind it. Shooting a video and then editing, it takes a lot of time. Like shooting में तो I don't have that much problem, but in editing I face so many problems because editing takes a lot of time. मतलब एक बार आप shoot करो फिर edit करो तो it is a long process. So इस वजह से I was not able to record the videos. In between I tried to record one of the videos, but then फिर again I was not able to edit it. So इस वजह से I was not updating here on YouTube. एंड फिर बीच में क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी सही से इन जुलाई, स्पेशली कुछ रीजंस की वजह से. सो बट नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं रेगुलर हो सकूं, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा एग्जैजरेट ना करूं वीडियोस को. आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी रॉ. सो आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट डेली व्लॉगिंग. मतलब कभी कभी होता है कि डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इफ़ आई व्लॉग तो मे बी मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिले इससे. सो देखते हैं. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि ऐसा हो ही जाएगा, बट आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड रॉ. एंड अबाउट टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ शॉर्ट context about today's vlog. I already had my green tea, my lemon water. I just got out of the shower, and today is Saturday, and I have 3 classes. I have my current affair lecture, and after that I have my ancient and medieval lecture, and after that I have my biology lecture. So I have in total 3 lectures, and I'll get 1 hour break in between those lectures. So I'll try to utilize that time in taking my lunch or another break for my tea and all. So yeah, this is the context, and after that I have to study for tomorrow's mentoring session because I have a mentoring session with my mentor tomorrow. So yeah, this is a brief context about what I did and what I am going to do. So without wasting any more time, let's jump into the main video. So पहले ही क्लियर कर दिया, आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी रॉ. सो एंड या डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. एंड या मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया है, मतलब अगर मैं इनसाइट्स चेक करती हूँ तो 90% 97% पीपल्स ऐसे जो वीडियो देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते. यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है. इफ़ यू विल सब्सक्राइब देन आपको डेली अपडेट मिलेगा. अब तो डेली अपडेट मिलेगा दैट आई एम पोस्टिंग द वीडियो. So it will be easy for you to find me. बस ये है, बाकी your wish. And yeah, so don't forget to like this video and share and subscribe. And also if you want to follow me on Instagram, then I am flashing my ID here. You can follow me on Instagram for more daily updates. Thank you so much. Now we should jump into the video. Both the conditions should be fulfilled. Not present but also voted. So 41. So what is the normal law making process? Normal law-making process is that by ordinary majority, that is simple majority, both the houses should pass, the law will be made. So what is the prerequisite for a law to come into action? The final becoming a bill becomes an act. First, it should pass by both the houses. We have joint sitting and all. That is a different thing. Just simple I am making it. Okay. And then it must get approval by the president. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. So here's a quick update on my video. I was watching my current affairs lecture. I watched it for like 1.5 hours. It was a 3 hours lecture. So I started watching it at 9 AM, एंड अभी ऑलमोस्ट 10:35 हो रहे हैं. मैं देख रही थी, आई स्टॉप्ड वॉचिंग इट
रीज़न ये है, आई एम बीइंग 110% ऑनेस्ट विथ यू. करंट अफेयर्स का ये है कि आई रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, आई रीड मंथली magazines, and in those current affair lectures he was just explaining the magazine, not only the magazine stuffs, not only the magazine वाला पोर्शन, उसके साथ भी वो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें दे रहे थे, मतलब टॉपिक क्या है, टॉपिक से रिलेटेड चीज़ समझा रहे थे हमें. बट मुझे उतना आउटकम लगा नहीं उससे. उसका रीज़न ये है, सी जिसको प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर समझने में, जो डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट रीडिंग मैगजीन्स, उनके लिए आई थिंक इट्स बेस्ट, लाइक दे कैन वॉच इट. ठीक है, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. बट फॉर मी, मुझे न्यूज़पेपर समझ में आता है, मैगजीन समझ में आती है. सो आई थिंक अगर वो कोई टॉपिक, मान लो ये मेक ए मैगज़ीन में 3 टॉपिक्स हैं, ट्रिब्यूनल्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, तो 3 टॉपिक को ही विल मेक अस अंडरस्टैंड फॉर 3 hours एंड आई कैन डू इट इन 1 hour और मे बी लेस देन 1 hour इफ़ मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ. 1 hour भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो मुझे ऐसा कुछ आउटपुट नहीं लगा उससे, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया. एंड अगेन आई एम सेइंग, जिनको लगता है हेल्पफुल है वो वॉच कर सकते हैं वो वीडियो. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू रीड टुडेज़ न्यूज़पेपर, बिकॉज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है आज क्योंकि मेरी क्लासेस थी. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द न्यूज़पेपर एंड उसके बाद आगे क्या करना है देखते हैं. Stay tuned, I'll keep you guys updated. So I just finished my newspaper and I also revised my monthly magazine, and now I am going to have my lunch, and which is chole and chapati. So here it is, and after lunch I have medieval and ancient histories class. तो फिर फटाक से लंच करके थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज़, वेलकम बैक. सो आई फिनिश माई लंच एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह यूज़ किया, एंड अभी मैं जस्ट लॉग इन किया मैंने अपने पोर्टल पर, एंड आई एम वेटिंग फॉर माई सर, माई टीचर, हु इज़ गोइंग टू टीच अस एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री. अभी वो आए नहीं है, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम. जैसे ही वो आते हैं वो लेक्चर स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद फिर शायद से बीच में अगर एक ब्रेक मिलता है तो फिर हम कुछ बातें करेंगे. अभी तो सर ही नहीं आए हैं, सो स्टे ट्यून्ड. सो फाइनली सर आ चुके हैं एंड अब वो स्टार्ट करने वाले हैं. सो अभी मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो हम बाद में मिलते हैं. तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So my ancient and medieval class ended at 4 p.m. and I was so tired. I slept immediately, and then I just woke up and it's like almost 5 p.m. and my class is about to get started. I am, yes, a little bit tired right now, but I don't have any choice. I have to attend these classes. Otherwise बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा एंड आई वुड नॉट बी एबल टू कम्प्लीट इट लेटर. सो इससे बेटर है अभी देख लूँ. सो या लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर. Last class of this biology section, we did the basics of biology in the last class, the basics of genetics. So we are going to build on everything you have studied in that. What is DNA, what is a gene, and we're going to try and apply those things and learn about different kinds of technologies. So I hope you remember what we did in the last class.
Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. So these were some of the notes that I made today. This is from biology lecture. We studied about biotechnology, and then this one is from ancient and medievals lecture. We studied about Chalcolithic age. So these are some of my notes. So finally, it's 8 o'clock and I finished all 3 classes. उसके बाद तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है. मतलब आई एम सीरियसली टू टायर्ड राइट नाउ एंड मेरे चेहरे पे भी दिख रहा है वो कि मैं बहुत टायर्ड हूँ. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड अभी नेक्स्ट ये प्लान है कि नाउ आई एम गोइंग टू डू क्विक कार्डियो. It will be not more than 45 minutes because I don't have much time today. Otherwise I work out for like 1 or 1.5 hour, but it's not possible today. So yeah, I don't want to waste any more time, so I'm just going to complete my workout, and after completing my workout we will meet. So it is currently 11:30 p.m. and I started working out at 8:30 p.m. Then I had my dinner and I took some rest, and it's now 11:30. And now what I'm going to do is I'm going to revise my monthly magazine because tomorrow is my mentoring session, as I have already mentioned. So yes, I will be doing the revision of this magazine for the culture portion, security portion and environment portion. That's all. That's it जो मुझे करना है अभी. So this is January's current affairs magazine, and this is the security portion. So as I already told you guys that I always underline important topics, and then I highlight most important topics, and then I revise. So that's the whole process of revising in lesser time. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. So guys, it's 3 a.m. in the morning and अब मेरे से नहीं हो रहा है. So I am going to sleep because my back is paining. 3 classes and after that revision and all, my back is hurting. So I think I should wrap this up और मुझे सो जाना चाहिए. And thank you so much for watching this video. आपने यहाँ तक देखा उसके लिए thank you so much. And if you like this video, hit the like button, and I'll try to post this vlog as soon as possible. And as I told you that I'm not promising for daily vlogging, but I will try my best. Thank you so much. Take care of yourself and have a productive day.